देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है, आओ देखे क्रिकेट टीवी। Hello, good afternoon. Welcome. This is Cricket TV, and we are back with the preview of India versus South Africa, जो कि खेला जाएगा कल. और ये women's ODI का final है, and India has reached the final, and we are very proud कि India made it to the final. We are all very excited. तो शुरू करते हैं, एक के बाद एक सबसे पूछते हैं. हितवी, what do you have to say about the finals? क्या लगता है? I'm sure you're very excited, but what else do you want to say about the finals? क्या expectations है? Who do you think will play well? क्या score हो सकता है? I think this is the first time कोई नया विनर बनेगा Yes. ODI वर्ल्ड कप के लिए, कोई नया. एंड साउथ अफ्रीका मेंस टीम हैज बीन वेरी अनफॉर्चुनेट विद वर्ल्ड कप्स अभी तक. तो लाइक दे हैव वन वन लास्ट ईयर और सो, बट देन दे हैव बीन वेरी अनफॉर्चुनेट. तो उस हिसाब से आई थिंक वी हैव अ लक फैक्टर. बट देन अगेन आई थिंक इंडिया नीड्स टू बोल रियली वेल, एंड उनका फील्डिंग बहुत ही टाइट रखना पड़ेगा. दे कांट रियली बी वेरी लूज अबाउट इट. बैटिंग वी डिड रियली वेल, पर इतना कॉन्फिडेंट होके भी नहीं जाना है कि हम जीते जाएंगे. we'll have to, my gut says we'll win, जी. but we have to see. Yes, exactly. नारायण सर, दोनों टीम्स जो है वो पहली बार फाइनल्स में पहुंचे हैं, एंड आई एम श्योर बोथ ऑफ देम वांट टू विन. तो क्या लगता है आपको कि व्हाट शुड बी इंडियाज स्ट्रेटजी? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतने के बाद इतना भी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि वी टेक इट इजी टुमारो. तो मेरे ख्याल से टीम में कोई चेंज नहीं होगा. द सेम टीम which has won. Shefali did not perform in the first the chase, but she was hungo in the entire. She was fielding well and she had good. ऐसा नहीं लगा कि बहुत उन्होंने मैच खेले नहीं है और मैच खेलने आ गई है. So I think she has to do a good job. Coming to the Indian bowling, जैसे अपने डिस्कस करते हैं तो 6 बॉलर खिलाने पड़ेंगे, लेकिन फ्रंट लाइन बॉलर को इफेक्टिवली यूज करना है. 10 के 10 ओवर उनको बॉलिंग करानी है. एंटायर कोटा है टू बी डन. और एवरेज हर एक बॉलर का कैन नॉट बी अबव 5. मतलब दे कैन नॉट गिव 6 7 8 जैसे दे रहे हैं ना, ऐसे नहीं चलने वाला है. और प्लस जैसे अब की बार जेमिमा खेली है, एक बार जब हरमनप्रीत आउट हुई ना 36वें ओवर के अंदर, तो अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो ऐसा लगता था कि ये सब धीरे धीरे चले जाएंगे. तो जा मेरा डिनर ऑर्डर कर, मैं आती हूँ. लेकिन अब की बार नहीं हुआ. जेमिमा ने जी. दिमाग लगाया कि भाई मेरे को लास्ट तक खेलना है, तो लास्ट तक खेली. यू सी हर स्ट्रेंथ. शी फर्स्ट फील्डेड फॉर 50 ओवर्स 49 पॉइंट, और सेकंड ओवर में 9th बॉल पे आ गई खेलने की व्हेन शेफाली गॉट आउट. फिर पूरा 50 ओवर खेली. सो सी द स्टेमिना एंड द थॉट प्रोसेस. वो वेरी यंग प्लेयर है, ऐसा नहीं है खेल रही है, एज में बहुत यंग है अभी भी. तो वैसे ही ये जो टॉप बैटर्स हैं इंडिया के, स्मृति, हरमनप्रीत, जेमिमा, इनमें से एक को अगर चेस खेलना है तो लास्ट तक खेलना पड़ेगा. और अगर बिल्डअप भी करना है स्कोर, अगर बैटिंग पहले आ जाती तो ये खेलना पड़ेगा. दिस इज नॉट हैज टू बी, मतलब 10 आउट ऑफ 10 ये करना ही पड़ेगा उनको, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू वर्क आउट. एंड रोटेशन के टाइम, जैसे हमने कहा, रोटेट जितना अच्छा करेंगे, 6 या 7 रन पर ओवर का एवरेज चलते, एक चौका मार दिया तो ज्यादा दूसरे तीसरे चौके मारने की जरूरत नहीं है. मैं हमेशा कह रहा हूँ, और जिस तरह से वैसे खेलेंगे तो अच्छा होगा. डिफेंडिंग अगर करेगी तो डेथ ओवर्स की जो बॉलिंग है वो स्पिनर्स ना करे तो अच्छा. यही थॉट मेरा है. और फील्डिंग कैचिंग, तो ये चारों एरिया है जहां इंडिया को जैसे किया है वैसे. एक अब की बार फील्डिंग कैचिंग पोर रही, बॉलिंग में भी 3 ओवर अच्छे, 3 बॉलर अच्छे नहीं करे. लेकिन ये सब अगर कॉम्पैक्ट खेलेंगे तो आई थिंक इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड चांस टू वर्क आउट. I think they need to Nikhil bring sir, in. I think they need to bring in Sneh Rana again in place of Radha Yadav.
You need to strengthen your batting a bit. Radha Yadav's batting is not as good as Sneh Rana's. Sneh Rana is a good all-rounder, and you had to drop her. I think it was because her bowling was atrocious in the previous match. So like how you bench Jemima and then Jemima came back and started performing. Similar thing could happen with Sneh. I think it's good to send messages like that to some of your key team members. But I think getting Sneh might be back, and South Africa's performance has been swinging from the sublime to the ridiculous. I mean, they scored out for 69 runs against England and then the 78 runs against Australia, England, and then they made, I mean, it's like swinging like a fantastic team to an absolutely rubbish team. So we hope that they have their bad day tomorrow on Sunday, and and then they do that part, that 69 and 79 run part with us tomorrow. But I think that's too much to expect. But it's been a roller coaster ride for them. I think they have come out on top, like India, very much so. We won 2 matches, 3 matches, on the verge of being knocked out, and then rain came and played spoil sport for New Zealand. So I think both teams have been lucky. Both teams are there with that stroke of luck behind them. I think they understand that they need to make the best of it. It's going to be a good match because I think Woolward is on top of a form. And like we said against Australia, that if somebody takes Healy's wicket, then it'll be good. But the other players, Lishfield stepped up. So South Africa also has got a great team. I'm running out of battery, so I might just drop out in a minute or two. I apologize for that. But very quickly, I think it's important that we replace Radha Yadav with Sneh Rana. It's important that Kranti God is told to bowl not just pace but length, line. Try to restrict the run flow. Don't give away too many runs in the search wickets and search for. You be there controlling the runs and not giving away. Of 10 overs, Hanmanpreet must remember that. And of course, the fielding has to be spot on because they are killer fielders. I think in this tournament, I think next only to Australia, or maybe Australia has not been that good as we saw in the semi-finals. South Africa's fielding is spot on, and they are amazingly great. We have to match that because we could lose because of bad fielding. We could be good in bad, good in. If our fielding is bad, we're going to give it an extra 15, 20, 30 runs. Drop that one or two crucial catches, not going to help. But very important. Captaincy has to be on the spot. You must bowl your bowlers the right way. Renuka Singh has to be given 10 overs. Pace her out, bring her into and give her death bowling. And of course, you see Chandi the way you have been using her, getting her 10 overs in the right time to slow down South Africa. They are naturally instinctively hitters. So that's how Chandi can get those wickets because of South Africa's tendency to hit as much as they can. So I think it's going to be a great match, and I'm looking forward to it. And my sense, last time we gave a guarantee that India will win against Australia. I don't even remember. I said हमारी गारंटी है कि इंडिया जीतेगी. आज भी हम गारंटी देते हैं इंडिया जीतेगी. The record अगर देखें statistics तो 34 matches have been played between India and South Africa, and India won 21. South Africa has won 12. But in this series, we have lost against South Africa. So, well, we are hoping that we win. Any other comments from anybody? You have to watch only 3 players in South Africa: Captain Woolward, London de Klerk, and Cap, the bowler. Fantastic bowler. She's a super bowler. This time, if you see, she scored 42 out of 33 balls, and then bowled and got 5 for 20. In the first over, she got 2 wickets. So, her bowling was brilliant. I don't know whether you watched the match. Yeah, her bowling was brilliant. Brilliant bowling. Excellent. Brilliant. तो ये 3 लोगों को देखना है इंडिया को. बॉलिंग में एक देखना है और ये दोनों को देखना है. तो आई थिंक इफ यू लाइक हाउ वी सेड हीली आउट हो जाएगी और पैरी और इनको अगर देखोगे, अगर इंडिया ये देख लेती है ठीक. और इंडिया को टॉस जीतना चाहिए ना. टॉस जीतने का भी कोई एक नेट प्रैक्टिस होना चाहिए एक्चुअली हाउ टू विन टॉस. इंडिया, दो men and women both are losing tosses only. 23 मैच में इंडियन मैन एंड वुमेन 23 में से खाली 3 टॉस जीते हैं. Oh my God. Amazing.
Seriously. टॉस जीत के उनको बैटिंग दे, उनका But स्कोर देखे, फिर वो चेस करेंगे. sometimes it does you a favor. Australia won the toss and chose to bat. And they batted. Yeah, India yeah. had won the toss, they would have chosen to bat. I don't know what would have happened, but whatever happened happens for the best, I guess. Correct. Yeah. Absolutely correct. Plus बारिश Uh, नहीं आनी चाहिए. Yesterday it बारिश rained heavily. I was in Thana yesterday for some work. It rained heavily for last 3-4 hours, right from 3 o'clock to almost 6 o'clock. Yesterday. There should be, fingers crossed, no rain, full match. तो Yeah. चलिए देखते हैं मैच. Yeah, so let's all watch the match, and to all the viewers, do like and subscribe to our channel and share it with your friends. Thank you so much for joining us today, and we'll see you soon with the review. Thank you. Jai Hind. India. आओ देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलेगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है. आओ देखे क्रिकेट